Good afternoon, everyone, and special good afternoon to all the very sensitive people who have very dearly thought about this beautiful initiative. Thank you so much. An honor being here. It's a very nostalgic moment for me to be here. हिंदुजा हॉस्पिटल आना बहुत नॉस्टैल्जिक है, और वो क्यों है? आज इधर होना मेरे लिए बहुत स्पेशल है. I'll take you back to my journey. When I was 5 years old, way back in 1975, when suddenly I started losing power in my lower limbs, तब MRIs नहीं होती थी, CT scans नहीं होते थे, और मेरे blood reports, X-ray reports normal आ रहे थे. And that was the time my father is from a very humble background and he's a self-made army officer. With whatever limited leave as and when he used to get, he used to pick me up and take me to various cities. वेलूर भी ले गए, चंडीगढ़ भी ले गए, कलकत्ता भी ले गए, जहाँ उनको पता लगा वहाँ ले गए. And I very distinctly remember कि अपने कंधों पे बिठा के मुझे ऐसे वो मुझे यहाँ भी लेकर आए थे, और मैं हिंदुजा हॉस्पिटल आई थी. मुझे याद इसलिए है कि मैंने सी शायद पहली बार देखी थी अपने लाइफ में, उनके कंधों पे बैठ के, और वो यहाँ तक लेकर आए, जसलोक हॉस्पिटल भी ले गए. सो 1975-76 में ये जो चक्कर मेरे फादर ने काटे थे कि दीपा को हुआ क्या है, तब भी मुझे याद है कि पापा थक जाते थे मुझे ऐसे कंधे में उठा के एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, एक वार्ड से दूसरे वार्ड, और कभी ब्लड रिपोर्ट लेनी होती थी, कभी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास भी ले जाना पड़ता था, कभी एक्सरे के लिए ले जाना पड़ता था, कभी फिजिशियन के पास, कभी लंबर पंचर, कभी लैब. तो वो जो चक्कर हॉस्पिटल की बिल्डिंग में कटते थे टू कैरी मी अराउंड, तो वो दिन मुझे याद है. एंड यहीं पे आने के बाद पता चला था कि मेरी जो जर्नी है हॉस्पिटल की बहुत लंबी होने वाली है. एंड बाय विजिटिंग हॉस्पिटल जस्ट फॉर 1 day, 2 days, 4 days, it won't solve a purpose. So they were suspecting TB meningitis, sometimes they were suspecting tuberculosis or some spinal infection. So finally my father took me to Pune Command Hospital, and वहाँ पे मेरा treatment चला. फिर eventually एक myelogram X-ray आया, and then they found a blockage. The dye stopped just below the neck, and at T1 to T7 level there was a blockage of tumors. And then surgery happened. Then started the rehabilitation. Then again I saw, जब तक एक बेड पे पड़ी थी तब तक तो ठीक था, ICU में थी तब तक भी ठीक था, लेकिन that hospital again was a spread out hospital. For my parents to take me from the pediatric ward to the physiotherapy center, even within the hospital, and then get me back day in and day out. So it used to be a very, very awkward. And then those days I was put in braces, chest braces, caliper braces, because they were trying to make me stand as a part of my rehab and make me walk in the walker. So for me to be then put in an ordinary vehicle, or of course those days गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, कारें नहीं थी फादर के पास, तो एक लैम्ब्रेटा स्कूटर होता था, उस पे बिठाने के लिए वो पूरे कैलिपर खोले जाते थे, फिर मुझे स्कूटर पे बिठाया जाता था, फिर जब मैं रिहैब के लिए पहुंच जाती थी मुझे फिर से वो कैलिपर बांधे जाते थे. सो आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कि ये कितना मुश्किल होता है. एंड इट डिडंट एंड हियर. Then my elder daughter Devika, she was born and she was barely a year and 2 months, and she had a head injury due to a hit on the road accident. Her left got paralyzed. Then first childhood में मैंने 3-4 साल अपनी डिसेबिलिटी देखी. मैरिज के बाद अपनी फर्स्ट डॉटर के साथ सेम थिंग स्टार्टेड. उसकी हेड इंजरी थी, फिर उसकी रीहैब हुई, फिर उसको हेमीप्लीजिया था, एंड जब तक वो ठीक हुई मुझे ट्यूमर्स वापस आने लगे और मैं फिर से इसी चक्कर में आ गई. तो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता कि जब मोबिलिटी चैलेंज होती है तो कितनी मुश्किल आती है. एंड Dr. Saab said that nobody really comes to hospitals for a happy time, but I'm really happy that today I am here for a happy thing. And I, years later, in spite of being on a wheelchair, have come for a very noble cause
and as someone who can inspire or at least motivate people to step out. Again, I feel very close to this initiation of Easy Move. Thank you Satish ji, Rajesh ji, who thought about it. सचमुच I don't know, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि he doesn't know कि और कहीं ये cabs हैं या नहीं हैं, लेकिन I have been round the world because of my sports participations. My Rio Paralympic medal has been my 18th international. तो आप clearly देखिए 18 बार तो शायद मैं विदेश चली गई हूँ, क्योंकि मेरे पास 18 अंतर्राष्ट्रीय मेडल हैं, और कई बार ऐसे भी हुआ है कि मेडल नहीं मिला है. तो मेरे जितने भी 25 एक फॉरेन ट्रैवल्स हुए हैं, आज पहली बार लगा है कि हमारा हिंदुस्तान उन फॉरेन कंट्रीज के बराबर आया है. क्योंकि ये फीलिंग, ये डिग्निटी, मैं हंस के टाल देती हूँ. आप लोगों ने व्हाट्सएप में भी देखा होगा. दो आई हैव नेवर अलाउड एक्सक्यूजेस इन माई लाइफ. आई हैव नेवर taken my wheelchair as an excuse or as a barrier. अगर infrastructure challenge था तो मैंने infrastructure of friends create किया और हमेशा 4 लोगों की मदद मांगी और हंस के कह दिया कि मुझे तो राजयोग है, मुझे तो लोग उठाए उठाए घूमते हैं. लेकिन trust you me, that is just to battle it, but it definitely takes away the dignity, and especially for a woman. You know, when you get up in the house and you're shifted, and me as a sports person, जिसके सिर्फ shoulders काम करते हैं, I have nothing below the chest level. I have a very high spinal cord injury and 3 repetitive surgery, lemnectomy on my spinal column on the 7 vertebrae. So the doctor's language, they would understand how delicate is my body, how delicate is my spine. For randomly people to shift me again and again out of my wheelchair is dangerous to my body. It is not just something of low dignity, but at the same time, and for a woman to be carried like that and again by strange people and in a strange manner and not in the correct manner, then I can either hurt myself or feel a little uncomfortable by the touch of strangers who don't even understand my body. At the same time, if somebody pulls my shoulder, you can damage my shoulder, and this shoulder serves the nation because I play from this hand. So this kind of dignified mobility is what we really look forward to. And आज भी मैं अपने साथ बहुत बच्चों को बोलती हूँ कि आइए खेलिए. तो अब खेलने की जगह में जाके हम 2-4 ऐसे रैम्प्स बना लेते हैं, हम कुछ एक बार्स लगा के किसी तरीके से अपने बाथरूम्स को भी हम कर लेते हैं मॉडिफाई अपने प्लेइंग एरिया में. कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड्स यूज़ कर लेते हैं कि चलिए बाथरूम नहीं मिलेंगे तो डायपर्स लगा लेते हैं या यूरिन बैग्स लगा लेते हैं. लेकिन वो अपने घर से प्लेइंग ग्राउंड तक कैसे आएंगे? वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मार देता है. तो रहने की जगह को मॉडिफाई कर लेते हैं, खेलने की जगह को मॉडिफाई कर लेते हैं, लेकिन खेलने आने और जाने के लिए तो ये इश्यूज जब मेरी लाइफ में आने लगे थे और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत चैलेंजिंग फैक्टर हो जाता है. तो टू बैटल दिस चैलेंज आई डिसाइडेड टू ड्राइव. ऐसे चलिए मैं खुद ही ड्राइव कर लेती हूँ तो अपनी एक परमानेंट गाड़ी हो जाएगी. और अहमदनगर में हमारा फार्म हाउस है, वहीं पे सब सेटल्ड हैं, आर्मी से रिटायर होके मेरे इन-लॉज. तो मैं जब रजिस्ट्रेशन के लिए गई तो मुझे इतना पता था कि मुझे कुछ टैक्स रिबेट मिलता है बिकॉज मैं फिजिकली चैलेंज सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट का मेरे पास, और मेरा लाइसेंस भी बनना चाहिए. तो मैंने जाके जब आरटीओ सर से बात करी अहमदनगर में, तो दे हैड नो प्रोविजन. They did not even know what is invalid carriage, and I was very angry and sad both. And the number that I got was of Mr. Sahasrabudhe, and he was the first person I called sitting here. And आप मानेंगे नहीं कि he's the first government official. I worked with the policies. I worked as a member in the 5-year planning commission for sports policies. I have been playing for last 10 years, and time and again I have raised issues regarding disabilities. I have done a lot of running around, fought for a government job. He is the only government officer who has worked
to enable me to get a license and also register my vehicle as invalid carriage over a phone. I did not have to go to his office again and again. 19 months and just one word was troubling us. The Motor Vehicle Act said the vehicle manufactured to suit the disability of a person. But when we looked around, we could not find manufacturing places for vehicle for the disabled. So what we would do, we would modify. And the moment we would modify, this एक अंग्रेजी के शब्द ने हमारी कमर तोड़ दी मोटर व्हीकल एक्ट में. And 19 months लग गए मुझे, 19 महीने to get that done. And for continuously 19 months, Mr. Sahasbuddhe was with me fighting it. And he eventually got it. क्योंकि मैंने उन्हें सिर्फ एक लाइन कही थी. मैंने कहा था, सर, मैं फौजी की बीवी हूँ, फौजी की बेटी हूँ. And I'm a very rightful, dutiful citizen of this country. I will not give 500 रुपए की रिश्वत to the agent. वो कहते हैं 500 रुपए दे दोगे तो कहीं से टूटा फूटा बना देंगे लाइसेंस. मैं ईमानदारी से गाड़ी चलाना चाहती हूँ जिसमें मेरा इंश्योरेंस भी वैलिड हो. And he says, yes, I stand by you. And thank you, sir. I may not have got an opportunity. And thanks to his help, like they said, कि ये पहिए मुझे रोकते थे. लोग मुझे इन पहियों पे बैठ के बोलते थे, हमें तो वो दीपा याद आती है जो हमेशा बाहर रहती थी. ब्लैडर कंट्रोल नहीं है, बाउल कंट्रोल नहीं है. दीपा is going to die in a room. And Deepa did not want wheels, which are actually a synonym, they're symbol of movement, they're symbol of progress. But just because these wheels were on a wheelchair, people were saying that my life has stopped. How can movement stop on wheels? But in the quest of the right wheels, it was Mr. Sahasbuddhe who took me there, and I finally got to do some rallies, and I made certain world records driving the cars and motorcycles thereafter. So thank you, sir. And today I feel overwhelmed when I am being a medium or an inspiration or at such a fantastic moment of launching of mobility for people with certain challenges and mobility challenges. Thank you so much for giving us dignity. Thank you so much for thinking of us. Thank you for creating this. Rajesh sir, thank you. Satish sir, for making it Hinduja's hospital, for implementing it and thinking about the dignity and the facility for people with locomotive challenges. And Sahasbuddhe sir, thank you so much for enabling it legally for people like us to enjoy that. I'm truly honored to be here, and I really hope and I wish that more and more officers help legalize these vehicles, more and more such policies and acts come forward and make it very easy for people like us to be in such vehicles, and more hospitals, not just hospitals. It's a good beginning, but I would definitely want more tourist places and other places to use such vehicles and give us our reach, our freedom, our dignity, and an ability for us to also explore the world and not be limited on the wheels, but move forward on the wheels. Thank you so much. And my daughter and me, we both have faced disability, and we do realize that a little help brought forward can really change a life. And whatever little that we can do, this is a small initiative called Wheeling Happiness, was co-founded, especially it was my daughter's idea. Currently she is pursuing PhD in Loughborough, UK in the subject which is disability sports psychology. And since I was here and we were talking mobility, so I thought I will also do my bit to give back. So here are 4 chairs that I have brought from our foundation side, and I'm very grateful for identifying people who can receive it and get benefited by it. So a small token from our side to those who need it. Thank you so much.